Hi there, how are you? I am back with another interesting lesson in English. That is another interesting story that we shall be translating from Hindi to English. So take care of the pronunciation, the words, how we change uh, any idea. We do not translate word for word, I have already told you. So take care. For translation, you need to grasp the idea, not word. You need not translate every word because this is not the way. We cannot do that. So we have to change the idea into the other language. We may have to change some words. So this is you have to take care. So let us read another interesting and informative and inspirational story. So let us learn. Hello friends, this is the story of today and its heading is Makdi, Chinti or Jala, and in English it would be the spider, the ant and the web. The spider, the ant and the web. So let us start. एक मकड़ी थी. There was a spider. उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया. It thought about weaving a web to live a peaceful life, comfortable life. और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेगी. And thought that she would be able to catch a lot of insects, flies in that web. और मैं उन्हें आहार बनाऊंगी तथा मज़े से रहूंगी. And I shall eat them and live happily. उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया. It decided a corner of a room और वहाँ जाला बुनना शुरू किया. And started to weave its web there. कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया. And the web was half ready. यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई. And the spider was very happy to see this, the progress of the web. कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी. She happened to look at a cat which was standing there, जो उसे देखकर हंस रही थी. And the cat was laughing at the spider. मकड़ी को गुस्सा आ गया. The spider got angry. और वह बिल्ली से बोली. And said to the cat, हंस क्यों रही हो? Why are you laughing? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया. What else shall I do? The cat replied. यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं. ये जगह तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है. यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? There are not any flies here. This place is very spick and span. What insect will come into your web? You will not be able to catch anything in this web here. यह बात मकड़ी के गले उतर गई. The spider understood. उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली का धन्यवाद किया. She thanked the cat for her good advice. और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी. And she gave up her web in between and started looking for another place. उसने इधर उधर देखा. It looked around. उसे एक खिड़की नज़र आई. And she spotted a window. और फिर उसमें जाला बुनना शुरू कर दिया. And it started to weave its web there. कुछ देर तक वह जाला बुनती रही. For some time she continued her efforts, her work. तभी एक चिड़िया आई. Just then a sparrow came there. और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली. And laughing or mocking at the spider, it said, अरे मकड़ी तू भी कितनी बेवकूफ़ है. How stupid you are. क्यों? मकड़ी ने पूछा. Why? The spider asked. चिड़िया उसे समझाने लगी. The sparrow explained to her. अरे यहाँ तो खिड़की से तेज़ हवा आती है. A strong wind
comes through this window. यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी. Not your web, but you also go flying with that wind, along with your web. मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी. The spider found that the sparrow was right. और वह वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी कि अब कहाँ जाला बनाया जाए. And she stopped working, weaving her web and started thinking where else she could go. समय काफ़ी बीत चुका था. It was already getting late. और अब उसे भूख भी लगने लगी थी. And she was getting hungry as well. अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा. She just saw open door of an old almirah. और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया. And it started weaving its web there in the open door. कुछ जाला बुना ही था तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया. She had done some of her work. Just then she saw a cockroach. जो उस जाले को अचरज भरी नज़रों से देख रहा था. Who was looking at the web in amazement. मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? Why are you looking like that? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? Why are you here? Why are you making this web here? यह तो बेकार की अलमारी है. This almirah is a junk. अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा. It is lying here, but after some time it will be sold and sent away. और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी. And all your efforts and hard work will go waste. यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा. Hearing this, the spider thought it better to move from there. जब मकड़ी को लगा कि आज कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने अपने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया. When the spider felt helpless, she asked for an advice of an ant that was passing there. The ant said, चींटी ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी. तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती. I have been watching you for quite some time. You always started your work and then left it in between when you heard other people say something. जो लोग ऐसा करते हैं उनका यही हाल होता है. Those who do like this is what happens with them. ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई. Saying this, the ant went its way. और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही. And the spider kept lying there lifeless and desperate and sad. So that's all. I hope you got something. Think about it and tell me also what you learned from this story. So see you again. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.